हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं तेजस शाह सर, जो कि एकॉर्ड इक्विपमेंट्स के ओनर हैं। एकॉर्ड इक्विपमेंट्स मुंबई में 97 से काम कर रहा है, मतलब मोर देन 20, मतलब मेरा 20 ईयर्स से तो ऊपर हो चुका है, 25 ईयर्स होने वाले हैं। एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेंटल हाउसेज, कैमरा रेंटल हाउसेज, ऑडियो रेंटल हाउसेज इन मुंबई। एंड सर, वेलकम टू माय चैनल। Thank you so much, Shitij. Pleasure to meet you. And maybe this introduction was better than what I would give for myself. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने बहुत आपके यहाँ से कैमरा रेंट किया है, बहुत, मतलब मेरी शॉर्ट फिल्म में, मेरी फिल्म में जो मैं छोटा मोटा एड फिल्म्स करता था, वो सब भी मैंने आप, मतलब बहुत हेल्प मिली है मुझे एकॉर्ड इक्विपमेंट से। एंड मेरे फ्रेंड है कमलेश गोस्वामी, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था आपसे, और बहुत हेल्प मिलती है। मतलब मैंने बहुत यंग फिल्म मेकर्स को देखा है जिनको एकॉर्ड इक्विपमेंट से हेल्प मिलती है, क्योंकि आपका बहुत वास्ट सेटअप है। सो सर, टेल मी फ्रॉम बिगिनिंग, कैसे स्टार्ट हुआ ये बिजनेस? So interestingly, I'm actually second generation involved with a lot of films as a financial advisor, as a financier, with a lot of big movies. What used to happen is, as a child, when I used to go on the sets, I used to always find something intriguing. यार एक शॉट लेने को इतना लाइटिंग को क्यों टाइम लगता है? जी, अच्छा, आप फिल्म फैमिली से ही हैं? Yeah, I'm a part of film family. Okay. So it's always intriguing कि क्यों इतना टाइम लगना चाहिए यार? वो 50 जन ऊपर सर पे खड़े हैं, लाइट घुमा रहे हैं यहाँ वहाँ. So that was always my thought. Why is it taking so much time? And then obviously my father passed away pretty early when I was in school. And then, but that thought was always in my mind. So I've done my engineering, and then when I finished my engineering, again the opportunity was there that the world was going digital, and that is the time we came back in this side to give out equipment with a solution. Let us make filmmaking. See, every Indian is a filmmaker by heart. कुछ ना कुछ तो स्टोरी होती है हर में. And I think when you make the उसके तो औजार आप इजी कर दो ना, so suddenly he has the opportunity. He'll try to do more work, and that is where we got into renting of equipment. That was our idea. So to begin, that is the genesis of Accord Equipments. तो सर, ये इक्विपमेंट बनाने का क्यों सोचा आपने? फिल्म मेकिंग करने क्यों नहीं सोचा कि बिजनेस टर्न आउट करने से मैं फिल्म मेकिंग करता हूँ इससे अच्छा? So interesting question. So if you go back, my father passed away in 81. Quite a few films under the belt: Dharamveer, Marg, Pehchan, Bemihan, Sannyasi. They were all super hits. Sir, क्या थे उसमें? When he passed away, used to be. So his name would come as financial advisor. He would be financer, part producer. We have IP. He would have rights of the movie and all. So that is how it was. But his main calling was, he was one of the leading chartered accountants. So people came to him for advice, and that is why he was called a financial advisor. So when he passed away, technically what happened is quite a few films which were under production stalled. And obviously the film industry worked in such a way that if the man behind it is not there, movie stalled, which is how it works always. So all those movies stalled, and that was the time I said, "Yeah, too high risk." I was in 6th standard. Yeah, this is not our cup of tea. And we also, so I've done my engineering, and the idea was that after my engineering, I decided what next step to take. But the idea of losing money wasn't on my mind. That's why I did not go into filmmaking. I thought film renting was a more interesting concept. I've been a part of as a production manager, EP, when I worked in Mudra. So that helped me understand what filmmaking is about. Achha, you had already worked in some films. No, yeah. In 92, when I passed my engineering, I had worked with Mudra, and I worked as EP and as a production manager for some of the ventures. So I also directed stuff there. So it gave me an idea what creativity is all about and what is expected. So it comes, I think, part of it is genetic, part of it is hands-on. तो जब आपने शुरू किया था तो कौन कौन से कैमरास थे आपके इसमें रेंटल बिजनेस में? Okay, so the idea when you start was I knew that shuru karna hai. I knew that I don't want to be one of the many. I want to be only one in the many. The world that time, 92, I started in 97. 92 I worked. 97 I started on my own. 97 everything was analog. I knew digital was the way forward. So I said I will go in with a digital camera setup to start with. I don't want to go analog. That is where I will make a difference. That was on the plus side. On the minus side was concept selling. The world was used to analog.
बोलो यार मैं ये कैमरा दे रहा हूँ which is cheaper, smaller and the media is cheaper and gives you better quality than बीटा कैम, पब्लिक बोलता है ऐसे थोड़ी होता है यार, how is it possible? क्या बोलेगा यार छोटा कैमरा लेके आ गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ। तो वो छोटा कैमरा देखकर ही एक्चुअली माइंड थोड़ा सा वो एक्टर का वो जाता है, इतने छोटे से कैमरे पे शूट कर रहा है। तो वो होता था। तो what happened is news was taking off 97 में, TV 18 काफी सारे चैनल्स आ गए थे। They wanted smaller camera, so that is why we found our calling। अच्छा यहाँ से एंट्री मिल जाएगी, वहां से इंटरव्यू शुरू हो गया, and then equipment started going। So but because we were niche, we got the first opportunity where people had to take, या तो जग मार गए या तो प्यार से सामान लेके जाना पड़ता था। So that is why we learned and grew from there। So बेसिक जो मोड था आपका प्रमोट करने का अपने रेंटल हाउस को, वो प्रमोशन करते थे या बिकॉज यू न्यू पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, सो आप उनको बोलते थे भाई मेरा कैमरा ले ले यार, मैंने कैमरा का बिजनेस शुरू किया है? How difficult it was at the starting phase? So I am a serious note, my father passed away when I was 6th, okay, so technically speaking I am a part of the industry, but I wasn't by the time industry people forget in 2 years। 6 महीने आप काम नहीं, लोग भूल जाते हैं। Yeah, which is fair। I think heroes are forgotten after every Friday। So I'm not saying, I'm just saying that things change every month। So you know, I'm talking of a gap of almost 81 से 97 is 20 years plus। So it is a fair thought। So I when I got back, I mean I can go back to work, but they are not using the cameras I was giving। Okay, they were all in film cameras। मेरे film cameras है ही नहीं मेरे पास। So I went with a different approach। I said as I said, once first of all let me be a niche player। That is the game I always wanted to play। niche में होगा तो अपने पास people सामने से आएंगे if the concept is good। And two was because my father had passed away, I knew that now there was nobody looking at my back। तो सक्सेस फेलियर वाज नॉट एन ऑप्शन, देयर इज नो प्लान बी। तो अभी इसको करना ही है बस, अपने को जिस तरह निकालना है। सो देन यू स्टार्ट मीटिंग पीपल। आप जाओगे, यू मीट समबडी, टीवी 18 से यार नहीं चाहिए, बट जब भी उसको जरूरत पड़ेगी तो यू नो कि एक ही बंदा है जो देगा यार। तो आई वाज एक्चुअली, आई टेक लॉट ऑफ हेल्प। आई टेक प्राइड दैट द जेंटलमैन ऑन टीवी 18 वाज माय फ्रेंड। एंड ही सेड यार एक काम कर, तू कैमरा दे रहा है साथ में ये भी देना, हाउ कैन यू डू दिस अलोन? सो आई लर्नड फ्रॉम हिम व्हाट इज टू गिव इट। सो दैट इज, एंड वी, आई मीन ओपन माइंड था, चलो यार व्हाटएवर रिक्वायर्ड शुड बी डन, एंड फ्रॉम देयर वी टुक ऑफ। तो सर ये कब बूम कब शुरू हुआ आपके हिसाब से, डिजिटल का बूम? मतलब उस टाइम पे डिजिटल का इतना अवेयरनेस नहीं था। इज इट बिकॉज ऑफ 5D Mark II और उससे पहले भी हो चुका था? So the digital boom for news, the videos, digital took off news में पहले आया, that was 97 में आया। The 5D Mark II changed the game। 97 में people were using only for interviews, PD cameras। पीडी कैमरा लेके आप जा रहे हो, 4 जन लेके 2 जन जाके आ रहे, एक इंटरव्यू ले रहे, कैमरा खड़ा करके वो शूट होता था। इजी कैमरा टू ऑपरेट, इजी टू शूट। lot of clients were by 2000 people were happily using this camera। 2000 in 2005 we had more than 20 cameras। So it was good। The change, what was happening is films were not going digital because these cameras lacked a certain thing called a shallow depth of field। Let's not get technical। I mean, you're a YouTuber, you will understand shallow depth of field। But it lacked a नहीं सर, जो हमारे सब्सक्राइबर भी है ना ज्यादा फिल्म स्कूल के ही हैं, so you can talk anyway, आप कहीं भी जा सकते हो किसी डायरेक्शन में। So they did not have shallow depth of field। So they said यार फिल्म वाला बोलेगा, जो महंगे डिजिटल कैमरास थे जिसमें apparently shallow depth of field हो सकता था, they were more expensive than film cameras। So logic ये बैठता है, वो फिल्म वाला बोलता है बस मेरे को फिल्म बनानी है। I am not getting into a zone where I am not comfortable। The cameraman wants film, he wants analog, and film was good। We can't dispute the fact that film, shooting on film is even yet liked by a lot of people। In 2000, so उसको मैच करना उस वक्त पॉसिबल नहीं था, फिल्म के फुटेज को मैच करना पॉसिबल नहीं था डिजिटल में। तो मैं पैसा भी ज्यादा भरूं, रिस्क लूं, और फुटेज मेरे को फिल्म से ज्यादा मिला, मैं क्यों करूं? There's no logic। But when in 2012 when the 5D took off, 70 पहले आया उसके, that was the time when people said, oh wow, I'm getting a camera which is cheap and I'm getting shallow depth of field। So he said यार अभी सकते हैं, because then suddenly you got two genres के, I can't afford a film camera, या तो दूसरा कैमरा ले लो, एक बड़ा कैमरा रखो, एक साथ में 70 ले लो, 70 का 5D हुआ बात है। 70 लेके चलो लोकेशन पे, वहां पे हम लोग बी रोल शूट कर लेंगे, ये शॉट ले लेंगे, वो शॉट ले लेंगे, पोस्ट में मैच कर लेंगे। That is when the trend started of using the DSLR। And the difference of price was also very huge। मतलब 5D Mark II जिस लेवल पे, जिस प्राइस में आता था और जो क्वालिटी दे रहा था, तो अगर वो क्वालिटी उतनी ना भी देता तो भी लोग प्रेफर करते कि भाई जिस रेट में मिल रहा है उसमें ये क्वालिटी अच्छा नहीं मिल सकता था उस टाइम पे। एक तो
see, every camera has a limitation. The 5D is limitation. अगर आप कैमरा को पैन ना करो, जूम ना करो, रोलिंग शटर वो सब आता था उसमें. हाँ, वो आप करोगे मत ना. You plan ना. आप when you shoot, keep a fixed block ना. इसको मालूम नहीं पड़ना है कि it is shot on a 5D. Is a large sensor is a film camera. आप लेंस अच्छा ले लो साथ में. You are sort of taken care of, and you know कि मैं इतना शूट 5D में करूंगा, ये बाकी शूट मैं रेगुलर कैमरा पे कर लूंगा. तो and as you said, pricing was a difference. Plus फिल्म कैमरा में तामझाम है. आप 3 बंदे आते हैं, शाम को बैकअप, so much footage will be taken care of, footage management. Not that इसमें नहीं है, but it's easier to manage. So people say 5D में एक बंदा आएगा साथ में, मेरा कैमरा में संभालेगा, असिस्टेंट है वो देख लेगा. So now I got 2 cameras in the same crew. So मेरा फिल्म कैमरा तो लेना ही था. So that was a tipping point. People started understanding. Second, also the new generation of cameramen came in. Who were open to the idea that it's not only film, I can do work on a 5D also. So that हाँ, जो कि इनिशियली बहुत रेजिस्टेंस था, बहुत सारे यहाँ से जो चेंज हुआ ना. So it was but the challenge was that, and by 2012 people were ready कि हाँ हो सकता है. 2000 में digital came in, and by 2012 10-12 साल निकल गए थे when people said okay fine, we are ready, we will go with the 5D. And today तो we are talking of so many movies, आपको पता भी चलेगा कितना when you are shooting film कैमरा कौन सा है. अब तो डिफरेंस भी पता नहीं चलता है actually. Most people not, the cameraman also know कि यहाँ shooting कर लूँगा. See, audience also is happy to see a good visual. They don't care कहाँ shoot हुआ है. Audience को फर्क नहीं पड़ता. Yeah, they want to see good content. So they should be happy with it. और ये बूम भी शायद साइमल्टेनियसली हुआ. YouTube आ गया एकदम से, और नए न्यू एज डिजिटल फिल्म मेकर्स आ गए जिन्होंने खुद भी बना के फेस्टिवल में भेजना शुरू किया. तो वो सारी चीजें एक साथ हुई. सर, तो एरी 435 था आपके पास पहले? We never went that route. क्योंकि why would I compete? See, let's face it, okay. I had come with the engineering background and limited funds. I didn't want to go and invest a lot of money on a format which I believe was dying. So I said, why would I go there? I rather create a new genre. And अगर 435 आता तो I am competing with 25 other big stalwarts who would have never let me. I mean, I would have been a Me Too. As I said, actually the reason behind why you are so successful in Mumbai is because you streamlined your customers. Okay, I'm targeting this customer only. I'm not targeting this customer. क्योंकि एरी 435 तो मैं कहता शाहरुख ने भी खरीद लिया था, यशराज के पास भी था, सबके पास था अपना. But the cameras that you were giving, I don't think most of the people had. So अभी सर कौन से कैमरे जो हैं जो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल चल रहे हैं? If you look at it, see, when you go back to history, young filmmaker, sir, अब अगर एक बच्चे को फिल्म बनानी है, young filmmaker को, उसके पास समझिए 50,000 1 लाख रुपीस है, and he has to come to, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं कि कौन से रेंटल हाउस जाएं. मैंने आपको अप्रोच भी इसलिए किया कि मुझे लगा आप इनसाइट दे पाएंगे इन सब चीजों में बहुत अच्छी, कि लो बजट फिल्म मेकिंग करनी है या फिल्म स्कूल के बच्चे हैं और वो अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं. So what are the best cameras that they can choose from the wide range of cameras that you have? So it's an interesting question. Essentially the 2 aspects to filmmaking. Okay, one is I want to make a film at a low budget. Okay, that is the financial thinking. And one is I want to make because मेरी film छोटी है, मेरी छोट भी सोची है, मेरी सोच भी छोटी. That is the wrong thinking. I don't need to have a small thinking to make a low budget film. True. Budget is a part of a film, but my mind is big enough to create a venture which is large enough. Great sir. हाँ, ये सही बात है बिल्कुल. सोच छोटी नहीं करनी है. सोच छोटी नहीं करनी है. तो मैं कई टाइम देखता हूँ कि फिल्म मेकर आएगा एंड ही से यार एक 5D गिव मी अ 4K कैमरा और माइक क्या है, मैं कोई भी माइक वापर लूंगा. हाँ. So ये बहुत गलत थिंग है क्योंकि साउंड इज वेरी एसेंशियल. It's like having a good looking girl who you don't understand what she's talking. So what is the value of, after some time you get bored of her, na? So bad example, but that is a fact. So अच्छा, आप लोगों को भी डर लगता हो ना रिकमेंड करने में कि कभी किसी को रिकमेंड करो भाई अच्छा ऑडियो ले ले, तो उनको लगा अच्छा हमको जबरदस्ती मतलब रेंट कराने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं. See, at the end of the day यार अपने पास काम इतना है, touch wood, क्या फर्क नहीं पड़ता है. We have a good team with us. Yeah, we have a good team with us. What we come to walk into office and we walk out, we believe that what we have done in the day is respectfully done. We have never ever tried to push. Yeah, what is the point if your conscience is not happy with what you're doing? There's no value. यार अपने को ऐसा तो है नहीं यार. We have enough work by the grace of God, and there's enough. The industry is growing so fast. 100 जन में से मेरे को कितने जन चाहिए यार? मेरे को 10 जन चाहिए यार. So I am not catering. I am not trying to cannibalize other people's market. I have a simple belief that I never undercut. Okay. Nor do I believe when I think that
often people concept is 100 में दे रहे 90 में दे दो यार अपना प्रोजेक्ट होना है. We have never done that. We say I'll give you at 100, but I will give you a value add. I will give you support. I am not a vendor in my heart. I am a solution provider. I am your support system. हाँ, कई बार हम लोग साथ भी हुआ है, कैमरा लेने आते हैं तो आप लोग क्या हम वो फिल्टर ऐसे दे देते हैं कि अच्छा ये फिल्टर आप ले लो, आप शूट करके आओ. So correct, because see, that is a essential. Sometimes you may not know he needs it. I have been a filmmaker myself. मेरे boys have been filmmakers. मेरे लड़के जितने हैं, they have all gone on location. It is the essential of my office that आप location में जाओगे. Not because of anything else, but you should know कि वहाँ तकलीफ क्या पड़ती है. आप ऑफिस में एक खराब केबल देखो ना, तो वो लोकेशन में कितना हैरान करता है. So we are clear कि extra सामान भेजो, so that on location there should be no stalling. We are a part of a bigger venture where equipment is a small percentage होता है. या आपके जो एम्प्लॉइज भी हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं, मैं उन लोगों से हम लोग की बात भी होती है, हम लोग के शूट पे भी आते थे, दे वर वेरी फ्रेंडली. मतलब दे वुड हेल्प अस, दे वुड लाइक कि अच्छा भाई आप ले जाओ, अच्छा आप इसको यूज कर लो, प्रॉब्लम आए तो हमें बता देना, विल कम देयर. तो दैट इज वेरी गुड थिंग कि यू नो कि एक यंग फिल्म मेकर जब कैमरा आपके कैमरा जो रूम में जो घुसता है, जो बड़ा सा आपका गोडाउन है, और वहां पे ओवरवेल्म हो जाता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी कैमरास एंड सो मेनी इक्विपमेंट्स दैट ओवरवेल्म होना ही होता है. एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्ट टू हेल्प कि आप ये भी ले लो, आपको ये जरूरत पड़ेगी. एंड यू से कि नहीं मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को ये चाहिए नहीं आपको जरूरत पड़ेगी. आप डीओपी को बुला के लाइए, आप पूछिए उनसे कि जरूरत पड़ेगी. देन आई कॉल द माय डीओपी के चाहिए, हाँ यार वो तो चाहिए. देन यू रियलाइज ओके दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू. सो दैट इज अ ग्रेट थिंग दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट. So वो मुझे अच्छा लगता है अकॉर्ड इक्विपमेंट्स में, that you actually have built a kind of family kind of thing. It's not just about rental business, it's about helping people. So I mean, as I say, I mean, my brochure says we have no clients, we have only associates and friends. Okay, so जो आता है बंदा दोस्ती होना चाहिए. What is the value of doing business when you're not happy with the person you're dealing with? So and you asked me a question earlier कि भाई अगर जिसके पास 50,000 लाख का बजट है, तो what camera I should take now? It's a thought that 50,000 लाख का बजट है, लेकिन उसको कितना दिन का शूट करना है. Let's say I'm giving उसको 2 दिन का शूट करना है. उसका खुद डायरेक्टर है. Okay. कैमरामैन उसका फिल्म स्कूल का दोस्त है, so he is taking care of his technical crew. साउंड रिकॉर्डर उसका दोस्त है फिल्म स्कूल से, he is taken care of. नहीं तो he has to hire, which is a part of the cost. But I'm just saying, he ideally should be thinking of a one location. He should not have scripted for a Taj, because वो 50,000 में Taj परवड़ना नहीं है. He has to pick up a location which he should afford. Now comes to the camera. You got a 5D Mark IV, you got a Sony A7S III, you got a Panasonic S1H, Nikon Z6. So all the big companies have taken care of that genre. Now it comes to the feel of the camera person. I like the look of Canon or Nikon or Sony. So you pick up what is the selection and go. So I am not taking a particular brand's name because it might look यार Tejash is pushing promote कर रहे हैं. Yeah, so I am just saying that you have to be fair in your mind. क्या चाहिए? I'll tell you ये 4 चीज में ये advantage इसका ये है, इसका low light अच्छा है, इसका rolling shutter नहीं है, इसका ये नहीं है. You decide now how much light you have. Light नहीं है, अब low light ले लो. आपको लोकेशन में जाना है, रात को शूट करना है, नहीं कर पाओगे without lights. लाइट का बजट नहीं है आपके पास, तो change your plan accordingly. So we put forward a plan कि आप ये कर सकते हो. Rest of the decision is yours from there. और एक चीज मुझे और अब ऐसा लगेगा कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, पर सच बात है कि मुझे जो अकॉर्ड इक्विपमेंट्स में अच्छा लगता है वो ये है कि सबसे पहली बार मैंने अजीब सी लाइटें भी आप ही का देखी थी. मतलब नई डिजिटल लाइट्स लेके आते थे, पता नहीं कौन कौन सी, कुछ रॉड्स थी आपके पास, कुछ गोल लाइट थी. मतलब अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया है, अमेजन पे बहुत इजीली मिलने लगी है, पर बहुत टाइम पहले मतलब 2014, 15, 2013 में मैंने ये सारी लाइट्स आपके यहाँ देखी थी. सो आई फील what I like about Accord equipment is that you are very innovative, that you invest in new technology. So where does that come from? So on a serious note, मतलब वो अभी सक्सेसफुल नहीं है, पर आप उसे खरीद लेते हो, फिर एक्सपेरिमेंट करते हो, and you give it to filmmakers. So to go back a little, because I believe, okay, education matters. Okay, I come from educated background. My father, my wife, my brother. So that matters is because it sort of widens your horizon and ability to. I may be down. मेरा engineering करता हूँ, तो 4 दोस्त तो intelligent है, तो उसका थोड़ा मेरे में आ गया. So I'm saying that environment makes a big difference to doing things. So I always believe one thing is, when I started, I wanted to be innovative. I wanted to be one of the, not only one in the many. So we have seen to it that is a niche. Niche is what we believe in. ना niche ही होना चाहिए. Where when the niche becomes mainstream, you take the next niche. So I don't know if you ever read. There's an interview by the guy who gives natural ice cream, Mr. Agarwal.
I don't know his name, whatever. I've heard his name, but I haven't seen his interview. Yeah. So his interview is that I make ice cream and वो फ्लेवर चलता है, and 6 महीने में और कोई कॉपी करके देता है, उसको कॉपी करने तो मैं अगला फ्लेवर लेके आता हूँ. So you cannot stop. Imitation is the best form of flattery. वो कोई और कॉपी करेगा तो और भी लोग खाएंगे, और भी लोग मांगेंगे अपने से, तब तक मेरा नया फ्लेवर भी आ रहा है ना, एक और कैमरा आ जाएगा, एक और लाइट आ जाएगी. And today the whole thing is, as I said, it goes back to my childhood. I was wondering 50 लोग क्यों चाहिए, जो मेरी लाइट्स है हैंड में पकड़ने वाले. आप एक ड्राइवर भी खड़ा हो, बोलेगा साइड पे उसको ऐसा पकड़ दो, आज के लिए मेरे को खाली लाइट फिल करना है तो कर ले. Then a lot of things come from the camera. इतना कर लो यार, संभाल लेंगे. Because he's gone with a small crew, उसको परवड़ता ही नहीं है. People don't understand, a crew is expensive because उनको खाना खिलाना पड़ता है, रहना. So all those things also have to be taken care of. मेरी जो I have a sort of a track trolley which packs in a dicky. इतना छोटा हो जाता है, 4 feet का बन जाता है, गाड़ी के बूट में बैठ जाती है. Okay. Now if you take the same thing, वो ट्रक में आएगा with a regular film guy. उसके लिए साथ में 3 आदमी आएंगे, मैंने ट्रक का भाड़ा, 3 आदमी का खाना, सेटअप का टाइम. So everything adds up in a movie. जो चीज 10 दिन में बनना है उसको 20 दिन लग जाते हैं. But at the same time जिसकी रिक्वायरमेंट है तो है, उसका बजट ही 100 करोड़ का है, तो क्या फर्क पड़ता है. See, it is not that you can replace my stuff for it. It is a hostage for causes. जो अपनी जरूरत है आपको. आप जैसे आपके पास अगर 5D Mark II है तो आप फिर वो बड़ा वाला ट्रैक्टरी ओनली ले जाओगे, तो फायदा नहीं है. एरी 435 है या फिर एरी एलेक्सा, ऑलरेडी इतना भारी कैमरा है कि आप उसे छोटे ट्रैक ट्रॉली पे नहीं रख सकते. बट यू हैव टू मैच द इक्विपमेंट विद द कैमरा. एट लीस्ट योर माइंड इज ओपन कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, अभी कौन सा लेना है वो मेरे पे है. Earlier that option was not there. Today the option is there. Today's option is there. So चाइना मार्केट कितना इंटरफेयर कर रहा है इस बिजनेस में? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे चाइनीज इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं मार्केट में. Are they reliable and useful? Okay. So on a serious note, Chinese equipment is reliable. Reliable. Whether we like it or politics not. Aside, politics aside, we like it or not, and at the end of the day, they have covered a certain degree of the market, which for financial viability and output, they are pretty well entrenched also in some segment. Whether and reliability factor is what I think a lot of the equipment which we bought from Europe or Germany was ultimately manufactured in a place you don't like, and it went there and came back to you. So I think Chinese people have just got that thing out. Fortunately, India is now looking seriously at this segment. LEDs are coming in, so I feel next 5 years maybe we will be there. I think they have helped a lot because बहुत सारे फिल्म मेकर जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. मुझे पता है वो रेड रॉक जो आता था, फॉलो फोकस, वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का आता था. फिर चाइनीज मैन्युफैक्चरर का मैंने 5 लाख रुपए में खरीदा था वो. तो मैंने कहा यार वो बड़ा शोल्डर माउंट जो होता है, मैं 5,000 रुपए मिल रहा है, मैंने कहा यार तो बहुत अच्छी चीज है. सो दैट इज वेयर दे हेल्प. उसमें वो ऑफ कोर्स रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो प्रेसिजन नहीं होगा, बट एटलीस्ट मेरा कुछ तो काम निकलेगा उससे. Yeah, so you may be surprised that precision, if I'm using a film lens, okay, which is really heavy, for example, then I need a follow focus which is able to control that strength, okay. But here I am shooting a light lens, so your alternative follow focus matte box and the shoulder mount is good enough. See, the whole grammar changed, okay. You're talking of cameras which are 30 kgs to a camera which is now 1.5 kg, so everything around it is also changed. So sir, आपके यहाँ कुछ पैकेज डील भी है फिल्म नए फिल्म मेकर से लेके? ओके, for 2 days you can take all these stuff for 2 days for this 20,000 bucks or 30,000 bucks. You have certain deals like that. Because people who are going to watch this are going to approach you because Accord Equipments को मैं इसलिए आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ ताकि वो लोग अप्रोच करें आपको, क्योंकि उनको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कैमरा लेने जाए कहाँ. उनको ये डर लगता है कि कहीं कैमरा लेने जाएंगे it will be very expensive. That is not so. So I think this is first of all, guys, to understand that let's say मेरी 100 रुपए की फिल्म बन रही है और मेरे दिन का 100 रुपए का खर्चा है. Equipment is 5%, बाकी सब सेट, एक्टर्स, लाइट्स, खाना पीना में गया, मेरा 100 रुपए का खर्चा दिन का है, तो उसमें से 5 रुपए मैं इक्विपमेंट में खर्चा करता हूँ. Now if he plans well, he is now saying that I want a full package. तो मेरे वहां से उसको ऑडियो भी मिलेगा, मेरे वहां से उसको लाइट भी मिलेगी, मेरे वहां से उसको कैमरा, लाइट, साउंड, ओके. And if he needs technicians, we'll give him that also. So what happens is he as a student has no production team.
technique. Or he as a young filmmaker has no production team. So it becomes ideal that he walks into an office of God and he gets all that. He gets all that and he tests it also. I give him a room to test, to bet, to satisfy कर अपने आप को. Okay. So उसका cameraman आया हुआ है, वो बोलेगा हाँ सर ये चल जाएगा अपना, we'll do this. So he is not compromising on his content anymore. He is getting whatever he wants, and I'm giving a full. That is also one great thing that in your office you can test everything. And package में क्या है? It depends on the situation. When you know the student is committed, जैसे आया हुआ है, अपना ही दिल ज़्यादा कर ले यार तू. एक फिल्म बनाएगा, अगली फिल्म में तो कमाएगा, तब मेरे को दे देना यार. So सही बात है. Industry जो आज assistant director है, कल वो director बनेगा ही. So if he is good, आएगा. If he's not going to be good, so then. तो भी आएगा. I was just saying that at the end of the day you have to support people. We cannot go cynical के यार पैसा मिलेगा तो ही काम करेंगे. Industry में invest करो. Everybody does that. It's not only me. I'm sure any director, any good person will help. When you see good talent, it becomes your, I think, duty to support that guy. True sir. So तो आप basically गुजराती हैं. हाँ, yeah. तो सर क्या सक्सेस फंडे क्या होते हैं गुजराती का? व्हाई गुजराती पीपल आर सो सक्सेसफुल एट बिजनेस? अभी मैं सारी चीजों से हट के फिल्म मेकिंग से हट के एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं. व्हाई गुजराती आर सो गुड एट बिजनेस? एक और सवाल है सर, इससे पहले एक और सवाल पूछना है. इंजीनियरिंग के बाद आपने जॉब करने का क्यों नहीं सोचा? यू एंटर इनटू फिल्म लाइन किया. अच्छा. सो मैंने किया यार. I went in a fabrication unit. और यार I said this is not my cup of tea. Okay. Somewhere genetically I knew कि मेरे को यहीं आना है. अच्छा. So in a few weeks I went to Mudra, and then I see also engineering का एक फंडा क्या है ना, कि you will find engineers everywhere. They will be what do you call, finance में चले जाएंगे, stand up comedians कहीं भी चले जाएंगे, terrorists बन जाएंगे, और राइटर भी है, फिल्म मेकर भी है, मैनेजर भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है. Because engineering is not about a degree, it is a way of life. Engineering teaches you simply a logical flow of thinking. इस करना क्या, इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. So it applies everywhere. So I think that is why you find engineers almost in all walks of life. Second reason to find engineers is, जब मैं पास हुआ ना 92 में, India was going to recession. हेवी रिसेशन था. हर्षद मेहता स्कैम भी हो गया था उस साल. you're on target. और स्कैम खत्म हुआ था और हम लोग बैठे थे, मार्केट इज क्रैश, एवरीथिंग वाज, एंड इंडिया हैड जस्ट गॉन ओपनड अप. 1992 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मनमोहन सिंह के रिफॉर्म्स आए थे. इन दैट टाइम इंडिया वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम बिकॉज़ सडनली गेम ए चेंज फॉर लाइसेंस राज टू ओपन व्हाटएवर. सो यू आर इन अ सिचुएशन वेयर जॉब्स आर नॉट कमिंग बैक. जॉब्स आ रहे हैं, सैलरीज आर स्मॉल. So the opportunity cost for an engineer ना is always very little compared to MBA. MBA का जॉब उसको गिनो के 100 रुपये मिल रहा है, हम लोग को तो 5 रुपये मिल रहा है. तो my opportunity cost to leave a job and start my own only 5% of a MBA. But sir, MBA was MBA huge at that time? मतलब IIMs का नाम था, IIMs थे. They were huge. MBA is always better paying. That's why you will find less engineers doing entrepreneurship. Because उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी हाई टू लीव एमबीए जॉब और स्टार्ट करना माने इस ह्यूज लॉस. मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत छोटा था यार, ऐसे भी कुछ चल नहीं रहा है, एंड जेनेटिकली आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, लेट मी गो इन दिस, एंड अपॉर्चुनिटी वाज आल्सो दैट डिजिटल वाज कमिंग इन. डिजिटल वाज कमिंग. आई न्यू दिस वाज अ ट्रेंड इन है. So 94 में ऑलरेडी हवा आना शुरू हो गई थी. So 97 we went in digital. 2000 was the time when digital got accepted. 2003-4 में पब्लिक वाला नहीं कर सकते हैं कैमरा में काम. So that is how the trajectory of India has been. सर वो बिजनेस वाली चीज बताइए. Yeah, coming to the question of Gujarati, see, I think Gujaratis per se are successful for two reasons. If you go back to history of Gujaratis, they have been displaced very often. कच्छ में गुजराती और मारवाड़ीज का हिस्ट्री है कि कच्छ में भूकंप हो गया तो you're displaced. गुजरात का बॉर्डर भी देखो, if you see the map of Gujarat, it is more, you will see some catastrophe coming to Gujarat every 2 years. कुछ ना कुछ होता रहता है, भूकंप या ऐसा कुछ आता रहता है. हाँ, अब you go back to history also, या तो बाढ़ आ जाएगी, because I think I have a feeling उसका जो आप मैप देखोगे ना, तो certain areas which are not of faulting, but I may be wrong. Okay. Same in Rajasthan is also, their businessmen are successful because वहाँ पे जमीन is not good, so वो बाहर निकल जाता है. So the openness to get out of their existing comfort zone is the first step towards success. Two is maybe we are little conservative in expenses. Very much. एक गुजराती रोड पे वड़ा पाव खा रहा होगा, आपको पता नहीं चलेगा वो करोड़पति अरबपति आदमी है.
Correct. So that is the sort of thing which happens. On the other end, now I tell you why I feel we had a very simple funda of succeeding. Be dependable. To keep your client, keep your promise to the line. तो आप आए हो, अगर मैंने आपको कमिट किया है कि ये दिन को आपको ये सामान मिलना है, तो I will see to it that we will see to it that nobody is compromised in that. You as a filmmaker have a certain mindset. Either I tell you from before ये नहीं मिलेगा, या तो अगर मैं कमिट करता हूँ मैं दूंगा. So we are dependent. We believe our dependability is the biggest reason. And two is uniqueness, as you said. Now we have done what other people have not done. That I believe is the reason for part of our success. So, what is the future vision for Accord Equipments of your company? Is there any expansion you are kind of thinking of doing? Like अभी सर जैसे लखनऊ में भी बहुत business होने लगा है. What next? जी, what next? So we've always been what next, okay? When 4 years back, when nobody was thinking of live streaming, we introduced live streaming as a vertical. Now nobody in the industry that time, या तो मैं कैमरा दूं, या तो लोग कैमरा देते थे, और take people who are from some industry were live streaming. So the other guy बोलेगा यार कैमरा यहाँ से मंगवा, मैं live stream कर लूँगा. So there's always two agencies you're dealing with. And one agency can blame the other के बराबर क्यों नहीं है, उसने नहीं किया या तो मैंने नहीं किया. Yeah, वो बोलेगा इन्होंने नहीं किया. So we said why don't we only bring live streaming into our fold? So so I said why don't we only introduce live streaming to our fold where a corporate client आएगा या producer आएगा, he says एक ही जगह फोन करो, पूरा crew मंगवा दो, live technical crew भी मेरा, camera crew भी मेरा, कहानी खत्म ना. So that was one expansion we did. Easy, so simple is not rocket science. You know, I mean, you're solving a problem. Solution providing is a job. तो कर दिया. Same with we had to do. We believe that 360 videos will start coming. We got a 360 camera. I think it has a huge future. It has a huge future. If metaverse does well, तो और भी लगेगा. But we got 360 cameras into our fold. So hit and miss होता है यार, हर एक चीज successful नहीं होती है. But if you don't experiment, then we've been in filmmaking. We have produced content. I can say I'm a national award-winning producer of 2016. कौन सी फिल्म सर? There's a movie called Headhunter, which we co-produced. Headhunter. अरे इस बार में तो बात ही नहीं करी मैंने, मुझे पता नहीं था फिल्म मेकिंग का करियर भी आपका. Then last year we produced a movie which is in the horror genre, which has been sold in an international market. So we've been in that zone, but it's not. You keep experimenting new things. Yeah. Again, the basic idea is when a person walks in, vibe अच्छा लगा तो काम करो. When you meet the guy, you find the vibe is good. Then you say, okay, fine, we can come in as some sort of arrangement where equipment can be ours as a stake or something. So at the end of the day, everybody is looking to create a certain content, but as long as the content is viable in viewership, and honesty of the filmmaker. Yeah, that is, I think the honesty is बहुत important है यार. His heart has to be where what he's talking. तो सर जो नए फिल्ममेकर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, जो अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं? They have so much limitations, restrictions inside their mind. तो आप तो डेली बेसिस पे कितने बच्चों से मिलते होंगे? Absolutely. So I feel that this is what I find, that one is the budget low and one is the mindset which is small. Budget small छोड़ो यार. I find an example, मैं shoot कर रहा हूँ and I tell them you're shooting a movie, why don't you have a data manager? तो इधर data manager परवड़ता ही नहीं है. क्यों नहीं परवड़ रहा है बॉस? आप फिल्म बना रहे हो, आपका शाम का जो फुटेज है that is worth your heart and soul and all money actually. Yeah, everything is there. And आप यार ऐसे बोल रहे हो कि मुझे इसके लिए बंदा नहीं है. It is not making sense to me. नहीं है, छोटे बजट में ऐसे ही होता है. ऐसा नहीं होता है छोटे बजट में. You have to have a person. So there's a mindset has to be big. क्या नहीं, my content बन रही है, आप content को संभालना ही आपको. You cannot. Actually मैंने देखा है young filmmakers make sacrifices on the wrong things. जैसे वो बियर पी रहे हैं रात को, कह रहे हो क्रू को बियर पिला रहे हैं, अच्छा खाना खिलाया, तंदूरी चिकन खिला रहे. Do that, less of that, and spend more on this, because that is more contribute to your film, not the beer and the chicken. जो रात में तो beer wrap up party तो करनी है, शाम को ये सब नहीं करना. That is where you should make the sacrifice. Second problem I find is that often I find a lot of these filmmakers who in the genre of the big filmmakers,
waste money. और उनकी जो स्टार चल जाते हैं. See, all of them have come from a difficult background, but they understood how to handle. So don't run those guys. Don't run down other filmmakers. You do what you have to, and do it in style and prove yourself. It's true. I think short filmmakers or any filmmaker who's aspiring will make content. He may make a short film. See, the short film is a very important pipeline to this industry because that is very proves his capability of handling production, direction, and the creative team and the talent. When he handles them well, he makes a good project. And maybe उसने YouTube में डाला या उसने कोई भी content वाले को बेच revenue share में दिया, but at least he has proved that I am capable of this. He will show that to 5 other big production houses, and then production houses say, "ठीक है, I can see some spark in you. I am going to hire you as AD or cameraman or whatever." So this is a pipeline to a bigger, sort of bigger vision. और आप vision ही छोटा रखोगे तो कहाँ से बड़ा होगा? So I feel this is sometimes missing in some young filmmakers is their own bankruptcy, as you said, they spend on the wrong things. They spend at the wrong things. Yeah. And also do not seek sympathy and help too much. जो मुझे लगता है कि कि money को बहुत ज़्यादा factor बना के कह रहे हमारे पैसे नहीं है पर कैमरा में वो चाहिए. Then it's your responsibility to get the money and hire the bigger camera. आपके अगर करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उस चीज के लिए. And the thing is, sorry, I interrupt. नहीं मैं तो बस ये बता रहा था कि जितना अच्छा कैमरा लोगे उतना अच्छा शूट होगा, because that is where you have to invest the money. So I have a little different take. अगर if only the camera made a difference, so I should have been a great filmmaker यार. मेरे पास इतने सारे कैमरा है. It's not. I think content of it comes from the film content. I think they have to think. I have a limitation कि मेरे को यही कैमरा पड़ रहा है. Okay, in this camera, this is the limitation. So let me plan my script breakdown to. I'm going to shoot with this camera like this, so that I don't compromise on the output that world will see. I know I have a limitation, so I will play with my limitation. Every human, like I may not be good at finance, so I'll hire somebody for finance, or I may not take that area only of work. Na, usko हटाओ यार और कुछ संभालो यार. So same way, filmmaking is about you check up all your guys, okay, who's got what strength, and use them accordingly. आपको मालूम होंगे मेरे को यही कैमरा परवड़ने वाला है जो सस्ता है, लेकिन इसमें ये भी है कि ये लो लाइट अच्छा करता है, तो I'll plan and take that camera for and shoot accordingly. So मतलब focus on your strength. Focus on what you have. Yeah, what you have and use that to the maximum and know your weakness and see that उसको दबाओ यार, ये weakness हटाओ ना. All cricketers do it यार. They know मेरा leg side strong है, off side strong है, they play accordingly यार. Thank you, sir. Thank you for so much insights and thank you for telling me so much about your life. This is as many questions as I can ask you and take your time. Thank you for giving me your valuable time और coming to my channel. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें पता चली and I hope कि जितने बच्चे हैं वो सब भी आपसे बातें सुन के बहुत इंस्पायर हुए होंगे और रिकॉर्ड इक्विपमेंट्स जाएंगे और जाके आपसे आपका कैमरा चेक करेंगे और रेंट करेंगे. मैं आता हूँ सर, मुंबई आके मिलता हूँ आपसे फिर से. Pleasure. I mean, the filmmakers are always welcome, but they can go anywhere. See, the idea is widen the horizons. आप accord में आओ, कहीं भी आओ, find the best place where you feel comfortable with the team, with the people. Our industry is not about you want to spend time with the. It's an association अपना, okay? If you don't build up a good, nice environment between two people, तो कभी होना नहीं है. You have to let go कि अच्छा मेरे को इससे जमता है, मैं इससे काम करूँगा. So हार्टफुली काम अपना इंडस्ट्री में हार्टफुली काम होता है. दिल से जो करते हैं वही आगे निकलते हैं ना. Sir, you have an alternate career in motivational speaking. Try करिए. नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हैं. चलिए सर, आता हूँ, मिलता हूँ आपसे जल्दी. ठीक है. Thank you for your time. Look forward to it. Thank you.